सो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट रूट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बिल्डिंग इन द Q1 ऑफ 23. सो राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ नवंबर 23 में, एंड उन्होंने जो डेवलपमेंट चालू किया था दैट वाज इन द Q1 ऑफ 23. सो Q1 में जो उनका टारगेट था दैट वाज टू लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट. सेकंड क्वार्टर में था उनका टारगेट AEC इंस्टेंट मैसेजिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट क्वांटम क्लाउड माइनिंग मशीन लॉन्च्ड. Q3 में उनका टारगेट था वॉलेट ऑनलाइन प्रोजेक्ट पब्लिक ऑफरिंग, एक्सचेंज ऑफरिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन पार्टनरशिप एंड मैकेनिज्म. एंड फोर्थ क्वार्टर में अभी चल रहा है दैट इज right now that is fourth quarter, the meta universe mall goes online, the establishment of the trading market. So this is the targets of Q1, 2, 3 and 4 of 23. अगर हम 24 की बात करें, so 24 में उनका जो टारगेट्स है इकोनॉमी, वेब3 इंफॉर्मेशन, मेटावर्स, बिजनेस एम्पायर, completed the trading system has been just seen the scale and users can synchronize and optimize the free trading governance in the मेटावर्स मॉल. सो दैट इज Q1 टारगेट फॉर 24. Q2 की अगर बात करें, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ AI इकोनॉमी, लॉन्च द अंडरलाइंग फैसिलिटीज ऑफ द प्लेटफॉर्म, एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट्स दैट यूजर्स कैन सेल्फ पब्लिश, इंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन डेवलपमेंट. दैट इज द टारगेट फॉर Q2. Q3 की अगर बात करें, दे हैव द टारगेट टू लॉन्च DAO गवर्नेंस एंड DAO गवर्नेंस ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म टू सर्व द यूजर्स. एंड फाइनली दे आर टारगेटिंग इन Q4 of 24 to have comprehensive upgrade of Meta Universe Mall economic system optimization and upgrade of platform income distribution complete Web 3.0 network. So this is the target for Q4 and 24. So they have started the roadmap process in Q3, 1 to 3 and 4, and 2 साल का उनका roadmap है, that is 8 quarters in total, 4 quarters for 23 and 4 quarters for 24. So this is the entire roadmap of this project, and you can access the entire roadmap at the bottom most section of this website, that is acmeta.com, and I will provide this link in the description box.